Okay, hello, good evening, guys. Welcome back to another session. We are live with another Hindu analysis for the day. How many of you are here with me today? Quickly give me a response in the chat box. Meanwhile, I'll share my screen. Okay, Tanish is here, GNZ is here. Good evening, guys. All right. Riddhi is here, Divij is here, Adrija is here, Arankita is here, Kashish is here. Good evening, all of you. Very good evening. How is everyone doing? दीप्ताक्षी is here, देवांश is here, दिव्यांश is here. क्या बात है, आज तो टाइम से आ गए सब लोग. Adnap is here. Okay, interesting. So today is 20th of September. It's a Friday afternoon. Not afternoon, it's a Friday evening. The weekend is coming very soon, and I hope your preparation is going on track. Achyut is here. Good evening, Achyut. आज का एजेंडा क्या है? आज हम थोड़ा सा हिंदू एनालिसिस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे एक न्यूज़पेपर का. विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट a couple of issues, and then we have a short Menti quiz based on what? Based on government schemes and initiatives as discussed, as planned. So that is the plan for the day. If you all are ready to start today's class, quickly give me a ready in the chat box, and then we shall start today's discussion. Are ready in the chat box if I'm audible, visible. GNZ is saying it's crazy how fast a week goes by. That's a good thing. If your week is going by really fast, that means you are keeping yourself busy. And I'm hoping in the right ways, in productive ways. जब टाइम पास नहीं हो रहा तो मतलब दिक्कत की बात है फिर कि यार हफ्ता खत्म ही नहीं हो रहा है. Okay, so we are back. This is the topic of discussion for today. FATF and court capacity is one topic we'll discuss. Social media and Australia. This is an article which talks about the policies and the comments made by the Australian PM. Can you tell me his name in the chat box? कल ही मैंने पूछा था आपसे the name of the Australian PM क्योंकि क्वाड की बात कर रहे थे हम लोग. जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो. Then again, the evergreen topic for this year, India and Russia, Ukraine. So there's an editorial article. So we'll quickly see what the editorial is saying. These are the three topics we will discuss today, and then we have a Menti quiz and then vocab. आज हमने फटाफट न्यूज़ नहीं रखी है क्योंकि आज ज़्यादा थी ही नहीं. एक थी, जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने. कैन यू गाइस टेल मी द नेम? हु इज द न्यू पीएम ऑफ द कंट्री जॉर्डन? ये एक वन लाइनर न्यूज़ थी आज जो मुझे दिखी थी. न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन, टेल मी इन द चैट बॉक्स. एंथनी एल्बनीज, यस करेक्ट. एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन कौन बने? आज की न्यूज़ पढ़ के आए हो आप लोग? जफर हसन, एब्सोल्युटली करेक्ट. जफर हसन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन. इनको इलेक्ट किसने किया, इनको चूज किसने किया है? इनको चूज किया है वहां के किंग ने, किंग अब्दुल्ला टू ने. इन्होंने रिप्लेस किसको किया? इन्होंने रिप्लेस किया है बिशर अल खसवने को. लिख देता हूं यहाँ पे, बिशर अल खसनबे. ठीक है. एंड जफर हसन जो है नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. किंग अब्दुल्ला इनके जो मोनार्क हैं उन्होंने इनको अपॉइंट किया है, किंग अब्दुल्ला टू. ठीक है. ओके, ठीक है. जॉर्डन की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री जॉर्डन? जॉर्डन की कैपिटल मुझे बता दो चैट बॉक्स में. देखते हैं किसका ज्योग्राफी स्ट्रांग है यहाँ पे. चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज एफएटीएफ एंड कोर्ट कैपेसिटी. तो चलो यहाँ पे चलते हैं. थर्ड नंबर पे आ गया ये. ओके, सो व्हाट इज एफएटीएफ? कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज एफएटीएफ? एफएटीएफ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है एफएटीएफ की? यस, जॉर्डन्स कैपिटल इज अमान, एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट इज एफएटीएफ? एंड एफएटीएफ ने क्या बोला? इन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी है. दे हैव रिसेंटली रिलीज्ड एन असेसमेंट रिपोर्ट जिसमें इन्होंने बोला है कि इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इट्स कोर्ट कैपेसिटी. एफएटीएफ कौन से केसेस से प्राइमरली डील करता है? कौन सा केसेस का डोमेन है एफएटीएफ का?
Financial Action Task Force, Jordanian dinar is the currency, absolutely correct. Financial Action Task Force, इसका headquarters भी बताओ मुझे कहाँ पे है? Where is the headquarter of FATF? When was it established? Which year? You need to know all of these things. तो देखो एफएटीएफ ने बोला है अपनी नई असेसमेंट रिपोर्ट में दैट इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इट्स कोर्ट कैपेसिटी, इंडिया नीड्स टू रिवैम्प इट्स कन्विक्शंस एंड प्रोसिक्यूशन व्हेन इट कम्स टू केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एफएटीएफ प्राइमरली मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो है डोमेन को केटर करता है। इसमें टेररिज्म भी आ जाता है, टेररिज्म को भी ये लोग ओवरलुक करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, दीज आर द प्राइमरी डोमेन्स व्हिच एफएटीएफ लुक्स एट। इंडिया का लेजिस्लेशन कौन सा है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कैन यू टेल मी द ईयर ऑफ दिस एक्ट? व्हेन वाज दिस इनकॉर्पोरेटेड, व्हेन वाज दिस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस? पीएमएलए का ईयर बता दो मुझे जल्दी से। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहा है इस साल भी बिकॉज ऑफ ईडी एंड अब्यूज ऑफ पावर ऑफ ईडी। ईडी क्या होता है? हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये लोग कह रहे हैं कि यू नीड टू गिव एडिशनल पावर्स टू ईडी या फिर यू नीड टू इंक्रीज योर कोर्ट कैपेसिटी, क्योंकि जो पीएमएलए के केसेस हैं वो बहुत लंबे लंबे चल रहे हैं। लॉट ऑफ केसेस आर स्टिल अंडर ट्रायल एंड पीपल आर इन जेल्स, तो केसेस को रिजोल्व करना है। तो दैट इज द जिस्ट ऑफ द आर्टिकल। बाकी मैं न्यूज़पेपर पे लेके चलता हूँ, आपको आर्टिकल दिखा भी देता हूँ। मोर और लेस तो यही है। कहाँ गया? खो गया आर्टिकल, आई कांट फाइंड इट। चाइना विल बी, चलो न्यूज़पेपर नीचे आ ही गए हैं हम, तो नीचे से पढ़ते हुए ही चलते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। The true cost of hospital infections, Kerala mortality, not important. Nadal, Alcaraz, not important as of now. Plucky Rawat, Samsung flexes. This is domestic cricket. This is football. This is F1. This is chess. This is cricket. इंडिया बांग्लादेश की बायलेटरल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। अश्विन जडेजा ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है। चाइना विल बी हाई ऑन क्वाड समिट एजेंडा। क्वाड समिट होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है? यूएस में होने वाली है अभी। इजराइल में अटैक होता जा रहा है, नहीं इजराइल अटैक करता जा रहा है हिजबुल्ला पे लेबनान में। पेजर ट्रायल्स, जर्मनी, ताइवान। ओके, ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, ये पढ़ लो आप। ताइवान रिकॉग्नाइजेस सेम सेक्स यूनियन बिटवीन चाइनीज एंड ताइवानीज। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन लाइनर, पूछा जा सकता है। फेड कट्स एजीआर ड्यूज, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, व्हाइट रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन रिगार्डिंग? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिगार्डिंग व्हाट? ओके, आई हैव रिस्पॉन्सेज फॉर माई क्वेश्चंस। मुझे दिख रहा है दीप्ताक्षी का रिस्पॉन्स। एंड मोड्राजो इज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, करेक्ट। मिल्क प्रोडक्शन, एब्सोल्युटली राइट। बाकी रिस्पॉन्सेज भी मैं देख लेता हूँ। मिशिका इज सेइंग एनैक्टेड इन 2002, अमेंडमेंट अमेंडेड एंड केम इनटू फोर्स इन 2005। दिस इज फॉर पीएमएलए एंड द आंसर इज करेक्ट। मेड इन 2002 and forced in 2005, absolutely correct. FATF works to prevent money laundering and terrorist funding activities, that's correct. मुझे किसी ने FATF का एस्टैब्लिशमेंट नहीं बताया ना, दीप्ताक्षी ने बताया। हेडक्वार्टर्स इज इन पेरिस, फाउंडेड बाय G7 इन 1989। तो 1989 में G7 की मीटिंग हुई थी पेरिस में एंड वहीं पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था एंड दैट इज व्हाई द हेडक्वार्टर्स आर आल्सो इन पेरिस। ठीक है, अच्छा इसमें टेररिस्ट वाला डोमेन कब ऐड हुआ? जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था तब दिस वाज जस्ट रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। व्हेन वाज द एजेंडा ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट फंडिंग एडेड टू द लेट्स से डोमेन ऑफ FATF? डू यू गाइस नो व्हिच ईयर? किस साल में मैंडेट, अगर बोले मैंडेट एक्सपैंड किया गया इनका टू इंक्लूड टेररिज्म? डू यू गाइस नो द ईयर? इट्स 2001। ठीक है, ये बताना चाहिए आपको एक फैक्ट। 2001 में this also included terrorist activities, terrorist funding, all of that.
दो टाइप्स की लिस्ट निकालता है एफएटीएफ। काफी बार न्यूज में रहती है कि एफएटीएफ ने इस कंट्री को इस लिस्ट में डाल दिया। कैन यू गाइस नेम द टू लिस्ट which are the two lists which are released by FATF? What are the two lists? Grey list and black list. Correct. सही जवाब। Absolutely right. It's grey list and black list. ठीक है। सो दो जो कंट्रीज जो हैं कंप्लाई नहीं करती हैं व्हेन इट कम्स टू कर्बिंग टेरर फंडिंग, कर्बिंग मनी लॉन्ड्रिंग, उनको ये इन लिस्ट में डाल देते हैं। इन लिस्ट में डालने का इम्प्लीकेशन क्या होता है बेसिकली, जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है एंड आपका आईएमएफ वगैरह है, वो फिर इनको लोन्स वगैरह, ग्रांट्स वगैरह नहीं देते। बेसिकली आपकी फंडिंग थोड़ी हैम्पर हो जाती है फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड आप पे कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस टाइप के कह सकते हो लग जाते हैं। ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में ये लोग डालते हैं उनको जो एकदम ही नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज हैं विच ओपनली सपोर्ट टेरर एक्टिविटीज। ठीक है। तो वो आ जाते हैं इनके ब्लैक लिस्ट में जो एकदम सीवियर वाली है। और ग्रे लिस्ट में एक तरीके से ये वार्निंग की तरह डालते हैं कि भाई आपकी कंट्री ऐसी है जो हमें लगता है इट इज प्रोवाइडिंग अ सेफ हार्बर, अ सेफ हेवन टू टेरर एक्टिविटीज, टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस, वरना हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है। तो अभी ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपको पता है? Which all can you name any country which is in the blacklist of FATF? ग्रे लिस्ट में इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को डाला था कुछ टाइम पहले, बट फिर हटा दिया, फिर निकाल दिया पाकिस्तान को। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है? एक तो इजी गेस कर सकते हो, नॉर्थ कोरिया। यस। व्हाट इज द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ, GNZ is saying there are more lists. I'm saying the most popular ones which are in news. ठीक है। लिस्ट तो बहुत सारी निकालते हैं ये लोग, that is true. नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार आर इन ब्लैक लिस्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, कुछ टाइम के लिए अफगानिस्तान भी था, जमैका नहीं है। इट्स नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। दीज थ्री आर इन द ब्लैक लिस्ट एज ऑफ नाउ। नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार। ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आर्टिकल ढूंढ रहे थे ना हम, सॉरी, किसी ने मुझे बताया पेज नंबर 10 पे, वापस आ जाते हैं। ये रहा, मिल गया। मेरे में तो पेज नंबर 10 पे नहीं है, मेरे में पेज नंबर 14 पे है। Maybe it's a different edition. I have the Delhi edition. So India should increase court system capacity and reduce pending trials. They are saying that we should increase the capacity of our courts and the capability of our ED. Major changes to address delays related to prosecution of terror financing cases have been suggested. Conviction rate ज़्यादा है, but there are number of factors which explain low number of prosecution over the evaluation period. ठीक है। तो prosecution कम हो रहा है, conviction तो अच्छा है, conviction rate। चैलेंज थ्रू 121 पिटिशंस टू पीएमएलए। तो पिटिशंस लोग डाल देते हैं, उससे चैलेंज हो जाता है, उससे फिर केस अंडर ट्रायल चला जाता है एंड ये सारी जो है पिटिशंस डिस्पोज ऑफ करी गई थी। इन विच केस? इन द केस ऑफ विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जुलाई 2022। ये केस का नाम याद होना इंपॉर्टेंट है, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये रहा। ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये फाइंड आउट किया कि 4163 इन्वेस्टिगेशंस वर इनिशिएटेड एंड 132 वर ड्रॉप। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फाइंड 864 व्हाइल 28 कन्विक्शंस वर सिक्योर्ड। तो आप देख रहे हो कन्विक्शन रेट कितना ज्यादा कम है। कन्विक्शन रेट इज जस्ट 28 पीपल गेटिंग कन्विक्टेड आउट ऑफ 4163 इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशन भी कम है, कन्विक्शन भी कम है। तो ये सारे चैलेंजेस हमें रिजॉल्व करने हैं। FATF observed that challenges were made to several powers of ED under PMLA, impacted the investigations. ठीक है। Legal challenges related to PMLA which are awaiting decision in court. Okay, legal challenges basically वही है कि ED के पास कितनी पावर है under the PMLA, और कोई legal challenges नहीं है। FATF said the country had achieved a high level of technical compliance across FATF recommendations, so that is a good thing for us. India faces serious terrorism and terror financing threats, including related to Islamic State or Al-Qaeda. ISIS and Al-Qaeda, these are terror organizations, as most of you know. ठीक है। तो वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। Alright, so और क्या आर्टिकल है हमारा? एंड देन अगेन वही एडिटोरियल आर्टिकल में यही है हमारा, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, इंडियाज रोल इन मीडिएटिंग पीस accord between Russia and Ukraine. So this is in light of the upcoming BRICS summit and the Quad summit, दोनों होने वाली हैं।
तो वहाँ पे ये सारे डिस्कशन होगा। ब्रिक्स समिट कहाँ पे होने वाली है एंड क्वाड समिट कहाँ पे होने वाली है? कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स वेरी क्विकली वेयर आर दीज समिट्स गोइंग टू हैपन? वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स नाउ, अब तो एकदम याद होना चाहिए। क्वाड समिट की लोकेशन एंड ब्रिक्स समिट की लोकेशन। तो यहाँ पे आर्टिकल में, एडिटोरियल आर्टिकल आपको ये बता रहा है कि इंडिया का रोल पिवटल क्यों होने वाला है इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज विच इज इन बायलैटरल टॉक्स विद बोथ द कंट्रीज एंड गुड रिलेशनशिप्स विद बोथ द कंट्रीज, हैज गुड रिलेशनशिप्स। सो अभी मोदी जी मीटिंग करके आए थे दोनों कंट्रीज में, दोनों लीडर्स थे, मॉस्को भी गए थे वो, which is the capital of Russia, and वो कीव भी गए थे, which is the capital of Ukraine। यहाँ पे मिले थे पुतिन जी से, यहाँ पे मिले थे जेलेंस्की जी से, एंड फिर दोनों की चुगली करी थी बिडेन भाई साहब को, कॉल पे बताया ये गप्पे लड़ाए हमने साथ में। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल इन दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज इंडिया हैज previously also raised issues when it comes to the G20 summit. We have raised the concerns of the global south. तो आर्टिकल बेसिकली एडवाइस दे रहा है कि इंडिया को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। इंडिया हैज ऑलवेज बीन नॉन अलाइंड एंड हाउ वी शुड डिवाइस अ फॉर्मूला विच शुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जो कि इंडिया का स्टैंड था जब एक बार स्विट्जरलैंड में एक समिट हुई थी, आपको याद हो अगर, जिसमें आपके वो नहीं गए थे, मोदी जी नहीं गए थे, उसमें जयशंकर गए थे। तो चाइना का एग्जांपल अगर आप ले सकते हो कि चाइना ने ब्रिक्स में किस किस को ऐड करा है, ईरान, सऊदी अरेबिया, दोनों को ऐड करा दिया। तो दोनों कट्टर थे एकदम, वन इज अ सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री, वन इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, बोथ डिड नॉट सी आई टू आई, बट चाइना मीडिएटेड pact between them and now they are still thoda sa less hostile to each other than they were. So we can take inspiration from that. We can understand how to strike a conversation, strike a solution, strike a peaceful accord between the two countries, be Russia and Ukraine. तो यही आर्टिकल बता रहा है आपको। एक बार मैं एडिटोरियल पे दिखा देता हूँ आपको, न्यूज़पेपर पे दिखा देता हूँ। आई मीन ज़्यादा कुछ नया है नहीं इसमें, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड डे इन डे आउट। इंडियाज प्लेस इन रशिया यूक्रेन पीस कीपिंग, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, हाँ अभी ठीक है। 2 years after government of India held that Europe's problem are not world's problems to distance New Delhi from the theater of Russia-Ukraine war, तो लोग हमें दूर करना चाह रहे हैं उससे। Vladimir Putin at BRICS summit next month, travels of National Security Advisor Doval, Jaishankar, point of action, ठीक है। Mr. Modi briefed US President Biden in phone call, ये मैंने बता दिया आपको। India's role and the full picture. India's advantage and reasons for playing this role is one of the few countries engaging both the sides in the geopolitical scenario. The West as well as Eurasian leadership, India's long-held beliefs, ठीक है। Honest broker और mediator, हम neutral party की तरह सर्व कर सकते हैं। India has important voice in the global 20G South, ठीक है। As a result, increase in Russia, India's intake of Russian oil leading to six-fold increase in bilateral trade has been projected as assertion of its principles rather than profiteering. ठीक है। What else is the article saying? Again, policy of neutrality की बात हो रही है। If the essay does say such a role, government would need a thorough assessment. Okay. Indications that New Delhi is engaging with all parties and developing its role as an interlocutor, but there are ifs and buts. Interlocutor is basically a mediator to initiate a dialogue. Ukrainian forces are successfully holding the line. Zelensky's move to occupy Russian territory in Kursk, इसकी हम बात कर चुके हैं, to get a barge gaining chip or a leverage. Then there is upcoming US elections. A win for former President Trump may mean US curtails its expenditure in support of Ukraine, seen positively by Mr. Putin and more sobering for Ukraine and Europe. While a win for US President Kamala Harris will indicate continuity in the US support. तो ये आपको पता होना चाहिए। Offering that would have to stand out. तो ये basically वही कह रहे हैं, हमें ऐसा solution बनाना पड़ेगा which stands out and is acceptable to both the parties. Zelensky recently rejected the 6-point Brazil-China joint proposal that proposed the same measure towards the path of de-escalation. तो ये प्रपोजल फेल हो गया था, 6-point प्रपोजल जो बनाया था इन लोगों ने। Larger role would imply India serving as a mediator or even the host for a summit between the two sides. Although given India's recusal from Swiss Peace Summit outcome may be a task. Why did we recuse from the Swiss Peace Summit outcome? वहाँ पे एक joint statement दिया गया था and India recused itself. That was because Russia was not invited on the table. Russia was not a participant of that peace summit. And India said कि जब दोनों parties हैं ही नहीं यहाँ पे, तो फिर कैसा आपका outcome और कैसा आपका proposal? ठीक है। तो I think you guys remember and recall what we had discussed back then.
कंसिस्टेंसी वुड बी द कीवर्ड, तो हमें कंसिस्टेंटली डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इस्टेब्लिश करनी है. एंड लास्टली द ऑथर सेज द क्रिटिकल एलिमेंट इज द टाइमिंग ऑफ इट्स foray into a field, and thus it has seen only failure. Late Israeli interlocutor Abba Eban once said in words that are true for the conflict. तो ये काफी बढ़िया सी लाइन इन्होंने बोली है. History teaches us that men and nations only behave wisely once they have exhausted all other alternatives. तो थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ मेन के साथ, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं. आर्टिकल लिखा है एक विमेन ने, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा. ठीक है, तो ये था आपका एडिटोरियल आर्टिकल, बेसिकली सेइंग इंडिया नीड्स टू प्ले अ की रोल इन द रशिया यूक्रेन पीस मेकिंग. ज़्यादा कुछ इसमें नया है नहीं. ओके, चलो वापस आते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन पे. सोशल मीडिया इन ऑस्ट्रेलिया. अब ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. ये आर्टिकल कह रहा है कि सोशल मीडिया पे हमें रेगुलेशंस लगाने. दिस इज ओपिनियन ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज. उनका एक इंटरव्यू टाइप का आर्टिकल है ये देखो. The Australian Prime Minister has announced a plan to set a minimum age to use social media platform. Should children be barred from social media? Amanda Third and this question with discuss the question with Mandira Modi. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाई वी शुड कंसिडर बारिंग सोशल मीडिया फॉर छोटे बच्चे. छोटे बच्चों पे गलत इम्पैक्ट जाता है सोशल मीडिया का, एंड दे गेट एक्सेस टू थिंग्स व्हिच दे शुड नॉट, एंड इट हैज मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स, इट हैज आइसोलेशन बेस्ड डिप्रेशन इफेक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस वजह से सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन एंड वी शुड कर्टेल. इसमें ये लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे कि एज बैरियर लगा, तो ये लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि वी शुड बैन सोशल मीडिया इन नाइट टाइम. वी शुड नॉट बी अलाउड टू यूज सोशल मीडिया ड्यूरिंग नाइट, लाइक 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, इस टाइप का. But then they discuss the merits and demerits of putting a complete ban on social media for children, because it may lead to things like people misrepresenting their age, identity identity theft जिसको आप कहते हो. तो देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे. Debate is in favor of a ban has largely been driven by parent groups. The government is under pressure to demand that technology platforms step up and assume responsibility for keeping children safe online. Australia is leading up to federal elections. ये हमने कल डिस्कस किया था. Meta has declared it will no longer pay money to news agencies to distribute news content. Ban looks seductive. It may not give parents what they're looking for, which is safer spaces for children. If children are banned from these spaces, companies will have even less of imperative to design platforms for them and for young people. We need to put more pressure on tech platforms to make the space safe. अब ये क्या कह रही हैं पराजिता मैडम, कह रही हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनफोर्सिंग एज लिमिट्स, डेविल लाइज इन द डिटेल्स. अब इंडिया की बात करिए कि जो इंडिया का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, वो कह रहा है चिल्ड्रन कैन एक्सेस एनी प्लेटफॉर्म व्हिच कलेक्ट्स देयर पर्सनल डेटा ओनली आफ्टर पेरेंटल कंसेंट. हाउ डू वी इंप्लीमेंट दिस, कि पेरेंटल कंसेंट आप कैसे चेक करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे. In Australia, when the PM said social media should be banned until 16, how would such a ban be implemented? It is unclear. कैसे आप रोकोगे 16 साल से बच्चों को सोशल मीडिया. आप वहाँ पे पूछोगे व्हाट इज योर एज, तो वहाँ पे वो डाल देंगे माई एज इज 24. तो हाउ वुड यू वेरीफाई दैट? क्या आप वहाँ पे आधार कार्ड इंटीग्रेट करवाओगे? क्या आप वहाँ पे कुछ ऐसा गवर्नमेंट आईडी मांगोगे जिससे एज वेरीफाई हो पाए? सो विल हैव टू सी दैट. दैट अगेन बिकम्स अ प्राइवेसी क्वेश्चन, कि अगर आप अपनी प्राइवेसी डिटेल्स डाल रहे हो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फिर कोई हैक हो जाता है, लीक हो जाता है, तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? तो उसमें बहुत सारे कंप्लायंस बेस्ड इश्यूज हैं. व्हाट इज द कन्वर्सेशन एट होम? सर्वे ये बताया इन्होंने कराया 10,000 चिल्ड्रन टीयर 2 एंड टीयर 3 cities of government schools of Delhi and found out 80% of children help their parents navigate online platform. पेरेंट्स जो है बच्चों को सोशल मीडिया चलाना सिखा रहे हैं, which is very true. I mean, this is practical on ground conclusion which you have, कि पेरेंट्स उतने टेक savvy नहीं है जितने बच्चे टेक savvy हैं. And when you put a complete ban on children using social media, I don't know what the implication would be. The number may have increased, but if we would ID-based verification, which has been proposed time and again, it would be hard for people who are less literate to do that. ये भी एक चैलेंज है. सबके पास उतनी लिटरेसी लेवल नहीं है कि भाई ID-based वेरिफिकेशन करें अपना. तो आपका जो आउटरीच है सोशल मीडिया का वो कम हो जाएगा. एंड आउटरीच कम होना क्यों चाहेगी कोई भी सोशल मीडिया कंपनी? दे वुड वांट मैक्सिमम यूजर्स, दे वुड वांट मिनिमम हिंड्रेंसेस फॉर पीपल टू कम ऑन देयर प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो यही सारे इम्प्लीकेशंस आर्टिकल में डिस्कस किए हैं कि स्क्रीन टाइम का क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ designing an education curriculum which balances technology and also emphasizes physical sport and writing, all of that. Core curriculum हमारा ऐसा होना चाहिए where students are taught to be resilient online. Online bullying is a very big thing. Online criticism affects children a lot.
एंड आजकल तो सब है सोशल मीडिया पे, तो अगर कोई कुछ उल्टा सीधा कह देता है लोगों को बुरा लग जाता है। एंड सोशल मीडिया पे पीपल स्पेशली इन इंडिया हैव बिकम वेरी very dark, very dank. I mean, I don't know if you guys have observed it or not. People have become brutal, and I would even go on to say that in some cases, people have become insensitive. Also, people write the most ruthless comments under reels which are, let's say, made by a disabled person or made by a person from a marginalized community or a person who's from the LGBTQ community. उनके comment section आप कभी खोल के देखो, oh my god, the horrific comments you see there, I don't know what to say. You guys know it better. You guys know it much better than me. Parents share their personal data, children's personal data online at the cost of privacy of the children. ये वही मैं आपको बता रहा था कि privacy concern बन जाएगा एक, कि how do we ensure that the data is not leaked and the data is protected. Responsibilities of social media platforms in ensuring safety of children. This again puts the responsibility back on the companies जो कि वो लेना नहीं चाहती और वो ले पाएंगी भी नहीं. Like it's very tough to take responsibility कि आप वेरीफाई करो हर चीज विच इज बीइंग पुट ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो उनको एक तरीके से दैट्स वेरी टफ टू मॉनिटर. Okay, the recent study found that platforms like Meta, Google, Snapchat have made 128 changes related to child safety and policy. Sadly, we don't have anything like that in India yet. There are also needs to be more transparency around these design changes. Not enough for platforms to say that we have made design changes. It is also important for platforms to report the changes they see in children's behavior after making those changes. So a lot of reliance these guys are putting on social media platforms, which I believe that first it's tough to comply with, and secondly, what is the incentive for them to comply with? They would want minimum compliances for maximum users. So let's see how do we balance this thing, and क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, बैन होता है कि नहीं होता है, इंडिया में होता है कि नहीं होता है. सी, आई डोंट थिंक बैन होगा, एंड बैन होगा भी तो मुझे नहीं लगता इट वुड बी इफेक्टिव, but it is what it is. Okay, I think that's all we needed to know when it comes to newspaper analysis for the day. I'll quickly take you through the newspaper so that we see we are not missing any important news for the day, although there's not much which I felt was important. Hmm. Okay. FATF हमने कर लिया. This article we have done. India abstains from voting on UNGA resolution against Israel occupation. Trump not on travel plan. So पहले ट्रम्प ने क्लेम किया था कि मोदी जी would be meeting him when he comes to US for the Quad meeting, and now the ministry has cleared it up that Trump is not on our travel plans. हो सकता है हो. This might be a move for safety, for his safety, because ट्रम्प भाई साहब पे वैसी गोलियां बहुत चल रही हैं आजकल, तो safety concern is very important. There are a lot of US movies which are made on presidents getting assassinated and all of that. Have you guys seen any such movie? मैं रिसेंटली एक मूवी देख रहा था, उसमें मूवी का नाम था वैंटेज पॉइंट. उसमें एक असैसिनेशन दिखाया था फ्रॉम 7 different perspectives of 7 different people of an assassination. Very interesting movie. Do check it out once you're done with your CLAT exam. थोड़ी पुरानी मूवी है, बट नाइस मूवी. बट कमिंग बैक, हमें न्यूज़पेपर पे तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आज दिख नहीं रहा है जो हमें डिटेल में कवर करना चाहिए. सो हम चलते हैं हम आज के मेंटी क्विज पे. We'll do our Menti quiz. It's a short quiz today, just 12-13 questions, I guess. I can't see anything which is important from a competitive exam perspective and has to be discussed in detail. One liners में वो जॉर्डन वाला था सिलेक्शन, वो मैंने आपको बता दिया. बाकी चलो आज चलते हैं हम अपने मेंटी क्विज पे. लेट्स गो. मेंटी क्विज का कोड, चलो वो कैप कर लेते हैं बिफोर वी डू आवर मेंटी, सो दैट we are done with the class and we are done with the menti. The first word for the day is approbation. Approbation simply means an acceptance of something as satisfactory. Synonyms are approval, blessing, praise. Antonyms: disapproval, refusal, rejection. Sentences: he tasted the wine of audience approbation. Basically, audience approval. Okay. The next word is fatuous. Fatuous simply means not having or showing an ability to absorb ideas readily. हिंदी में बोले तो मंद बुद्धि. ठीक है. Stupid, dumb, silly. Antonyms are brilliant, clever, intelligent. Ignoring the avalanche warnings, the fatuous skiers continued on their way down the trail. ठीक है. This is fatuous. Fatuous means stupid. Shambles, a state of total disorder.
After the party, the house was a complete shamble. The house was in shambles. Chaos, mess, havoc are synonyms. Antonyms are orderly, ordered, systematic, planned. So shambles is in disorder. Fatuous means stupid. And approbation means approval or acceptance of something as satisfaction. ठीक है. Okay, so that was vocabulary for the day. Let's move to our Menti quiz. This is the code for the day. People who are new to the class, I'll tell you the process. We have an online platform where we conduct an MCQ based quiz. You get one question, four options, and similar such questions. You have to answer them as fast as possible. Answer all the questions. There are no negative marking. You have to go to a website called www.menti.com. In a different tab, on your browser, or you can open it on your phones as well. www.menti.com. मैं टैब चेंज करना भूल गया क्या? Oops, 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 oops. My bad. So the first word was approbation and acceptance of something as satisfactory. Approval, blessing, praise. He tasted the wine of audience approbation. Approbation is acceptance of something satisfactory. Fatuous is not having or showing an ability to absorb ideas, which means stupid. Okay. Ignoring the avalanche. Okay. And shambles was the total disorder. My bad, I forgot sharing this particular tab. So you have to go to the website called www.menti.com and you have to put in this code 11048179, and that would take you to my quiz where I would be hosting the quiz and I would be taking you through the questions. You will get 15 seconds to answer a particular question. Answer all the questions as fast as possible. There's no negative marking. The topic for today's quiz is government portals, government schemes, government initiatives, all of that. It's a short quiz and an easy quiz. I wouldn't call it tough by any margin. So I'm giving you 30 seconds to go and register for the quiz before we start it. Just give me a done in the YT chat box if you have registered for the Menti, if you are on the portal, if you are ready to start. I'll also share my screen. I'll put the Menti portal on the screen. Yes, new GIF today. How's it? Do you guys like it? बढ़िया है ना? Okay, so this is the Menti code 11048179. I'll put it in the chat box also. Can't see the GIF. ऐसा कैसे हो सकता है? Maybe you'll be able to see it once I start the quiz. Chalo, let me present. We'll start the quiz in 15 seconds. So if you haven't registered yet, please do it at the earliest. I hope you all can see the GIF now. The Menti code is 11048179. You have to go to www.menti.com. Okay. Modi ji is flustered. ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज का क्विज. इज एवरीवन रेडी? Are you guys ready? www.menti.com. The code is on your screen, guys. I'm giving you last 10 seconds before we start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2.25, 2, 1.5, 1, 0.5, 0. Let's go. Let's start. Countdown is K. Mr. Arjun Ram Meghwal seems to be more interested. Okay, chalo, let's start today's quiz. So instructions are answer all the questions, be as quick as possible to score maximum marks. I hope all of you are ready to play. Let's see how many questions we have. We have 12 questions. We have 27 players ready. Why so? I can see 30 odd players on the stream. Have you guys not registered yet? Should I wait for 10 more seconds or should we start? I think we should start. We have 26, 27 players. I think rest of you can join in midway. Chalo.
The first question is coming up for you on your screen now. Okay, this was a trick question, and only five people got this correct. Which of the following is not an app related to the new criminal law? So there were four apps. Three of them are in the options. E-Saksha is one of them. E-Summons is one of them. Nyay Setu is one of them. There's another one also starting from Nyay. But these three are the apps which are related to the new criminal laws. E-Evidence is not an app which has been released yet. E-Evidence और E-Saksha का एक ही मतलब होता है. But the name of the app is E-Saksha. Evidence मतलब साक्ष्य होता है. So E-Evidence is a made up option by me. And that is the correct answer because I asked which of the following is not an app related to the new criminal laws. Let's see who are the five people who got this correct. मुक्ति, दीप्ताक्षी, तान्या, अदनान एंड सोनल. सो कैसा लगा? जोरदार झटका पहले क्वेश्चन में. मिस क्लिक हो गया अरमान से. प्लीज मेक श्योर यू ऑल डोंट मिस क्लिक बिकॉज जो क्वेश्चन आते हैं उन पे पॉइंट्स तो नहीं लूज करना चाहिए. मुक्ति इज द फास्टेस्ट, देन वी हैव दीप्ताक्षी, तान्या, अदनान, सोनल. रेस्ट नन ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट. Okay, second question. We have 27 players ready to play with us. Let's go for it. Question coming up now. Okay, almost half of you knew this. Flood Watch India 2.0 is the name of the app, which is for flood forecasting and flood control systems. This is an important question because we have had multiple severe floods this particular year. Kerala floods हो गए, आपके सिक्किम floods हो गए, उत्तराखंड floods हो गए. Okay, Mukti, Adnan, Arad, Arman, Riddhi, Nandini, Ansh, and Magical Rhino. Arad was the fastest. Okay, new name on the leaderboard. Congratulations. Mukti is on top. Then we have Adnan, Arad, Arman, Riddhi, Nandini, Ansh, Deeptakshi, Magical Rhino, and Tanya. Okay, question number three. Two more people have joined us. 29 players are ready to play. The question is coming up on your screen in three, two, one. Okay, only nine people got this correct. Most of you got confused with IND Textile. There's no initiative called IND Textile. That's a made up initiative. All of these are made up initiatives by me, except India Size, which is an actual initiative by the Ministry of Textiles because Indian body types, Indian body shapes are different from other countries, which usually make the standard. So we'll have a standardized measurement for Indians and Indian body types. And this is called the India Size Initiative. Let's see किस किस को पता था ये. Adnan, Riddhi, Deeptakshi, Dikshita, Diveja, and Sharvya. Again, new names on the leaderboard. Riddhi was the fastest. Adnan is still leading. And we have Riddhi, Mukti, Divesh, Deeptakshi, Dikshita, Sharve, Arad, Arman, and Nandini on the leaderboard. Okay, question number four. We have 30 players who have joined us. Welcome to the new players. The next question is coming up on your screen in three, two, one. Okay, so this is a one-liner which probably most of you have read, and majority of you got this correct. It's Mumbai Samachar 200 not out. So Bombay Samachar is Asia's oldest newspaper, and that is about to complete 200 years of its journey. And उस पे एक documentary film आ रही है, Mumbai Samachar 200 not out. ये तो सबको पता था. Okay, Adnan got this wrong. Dikshita got this wrong. Okay.
Riddhi was the fastest, has come up on the first position. Then we have Mukti, Devej, Adnan, Sharve, Deeptakshi, Arat, Steph, Tanya, and Dikshita. Question number five. We have one more new player, 31 players ready to play with us. Question number five coming up on your screen in three, two, one. ओके, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ये पीएम जनमन योजना। इसके अंडर पीएम जन जातीय आपकी योजना भी है, जिसमें आपका वो कौन सी अभी 5 लाख वाला प्रोविजन आया था टू ट्रांसफॉर्म होम स्टेज टू transform homes to homestays. So 2023 is the correct answer. Absolutely correct. Most of you got this right. Oh, Mukti and Adnan got this wrong. Okay, we have Riddhi on the first, Divij on second, Sharve, Arad the fastest, Deeptakshi, Steph, Tanya, Mukti, Adnan, and Dikshita on the leaderboard. Okay, we are almost halfway into our quiz. 31 players are ready to play with us. Question number six coming up on your screen any moment now. Deen Dayal Dash Yojana. Which Yojana are we talking about? This is related to stamps. ओके, लग रहा है तुक्के मारे गए हैं इसमें बहुत सारे। इट्स द दीनदयाल स्पर्श योजना, स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू एनकरेज स्टूडेंट रिसर्च इन स्टैम्प्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें इसके लिए आपको स्कॉलरशिप्स एंड ऑल मिलती हैं इफ यू वांट टू परस्यू योर हॉबी और स्टैम्प कलेक्शन, ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज द दीनदयाल स्पर्श योजना। Okay, Arad was the fastest again. Riddhi on first, Divij on second, Sharve, Arad, Steph, Adnan, Dikshita, Deeptakshi, Tanya, and Mukti. All right, we have crossed the halfway mark. The seventh question is coming up on your screen in three, two, one, now. This is an easy one. Okay, I think we have discussed this in one of our previous Menti quizzes as well. मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है। ई उपहार इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल जहां पे हम प्रेसिडेंट्स के गिफ्ट्स ऑक्शन करेंगे। Correct. 17 people got this correct. Okay. So it's a tough fight on the leaderboard today. If you are getting one question wrong, you are losing many positions. Riddhi is on first with the fastest response. Then we have Divij closing in on second, Arad on third, Sharve on fourth, Adnan, Dikshita, Mukti, Deeptakshi, Steph, and Alankrita has come up on the leaderboard. Interesting. Question number eight. We have 29 players ready. Any question can be your chance to come up on the leaderboard. So play attentively. Okay, most of you got this correct. It's the NPS Vatsalya scheme as a part of NPS to help parents with financial planning. Absolutely right. Okay, we have more or less the same people on the leaderboard, just a little bit of shuffle between Mukti and Steph. Riddhi was the fastest again and is on first position with 6666 points. We have 27 players ready for the next question, which is coming up on your screen now. Okay, most of you got this correct. This is related to suicide prevention, Umeed guidelines, and this is by Ministry of Education.
इजी हो गया मुझे लग रहा है आज का क्विज आप लोगों के लिए, और टफ क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे. Riddhi was the fastest, is on first position. Not many changes on the leaderboard. We are moving to question number 10th, the third last question for the day. 27 players are playing with us. Let's go for it in 3, 2, 1. Okay, Prasar Bharati is the answer. Although it's a government body, but Ministry of Broadcasting is not the exact answer. The exact answer is Prasar Bharati. Netflix and Jio Cinema are obviously the wrong answers, and they're going to launch a family-friendly OTT platform. Mukti was the fastest, has gained a couple of spots. Not much change on the leaderboard. The second last question of the day is coming up on your screen in 3, 2, 1. ओके, 10 लोगों ने तुक्का मारा है सुरक्षा स्कीम बोल के. इट इज द नमस्ते स्कीम विच इज फॉर एलिमिनेशन ऑफ हैजर्ड्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, सीवेज टैंक्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय जस्टिस मिनिस्ट्री एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री. ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है. मार्च से बनाया मैंने क्वेश्चन, मार्च 2024 से. सो जिन लोगों को पुराने करंट अफेयर्स याद हैं उनको ये पता था क्वेश्चन. Hmm. Interesting. Achyut has come up on the leaderboard with this question. Rest, there are not many changes. Riddhi was the fastest, still on the first position. And we have the final question for the day coming up for you. Question number 12 in 3, 2, 1. Shreshtha scheme. Which ministry? Okay, most of you got this correct. It's Ministry of Social Justice. Arad is going to lose a few spots. Okay. Riddhi is the winner of the quiz with the maximum points, the first position. Then we have Divij, Adnan, Steph, Dikshita, Arad, Deeptakshi, Mukti, Achyut, and Alankrita. Claps for all of you. Well played today. It was an easy quiz, as I mentioned, and Riddhi has once again aced it. So, congrats to Riddhi once again in the chat box. कैसा था आज का quiz? Did you guys like it? Did you guys enjoy it? I kept it pretty simple today. Oh, okay. Aradhana is Arad. Not accepting your full name. That's okay. I thought we have a new student called Arad who's super smart and has suddenly breached our leaderboard. But it's good to know that it's one of our old ones. Okay. मिसक्लिक हुए हैं आज काफी सारे लोगों से. कोई दिक्कत नहीं है. Okay, started off with first, ended with eighth position. That's all right. As long as you learn in the process and you get most of the questions correct, it is all good. For everyone who participated, give yourself a pat on the back. You performed really well, and I hope you all enjoyed the quiz. जो next quiz होगा हमारा वो होगा अब थोड़ा बड़ा quiz which is on Tuesday, coming Tuesday. So we are planning a revision series of the current affairs. Riddhi had suggested the months of January, February, and March. So if you all are up for it, quickly give me a yes in the chat box. Even if you are not up for it, we are anyway having that quiz. So it's better that you prepare for it. You have ample time. You have Saturday, Sunday, Monday. You have 3 days and approximately half day of Tuesday and half day today. So approximately 4 days to revise. So make sure you revise all your notes from January, February, March. The quiz is going to be moderate in nature. I won't make it very tough. I won't make it very, very easy. So prepare accordingly. We'll have 20 plus questions for the quiz.
It's gonna be an interesting quiz. Some tough questions, some sitters, and some wild questions as well. ठीक है. हाँ, ट्यूसडे वाला हम बड़ा करते हैं, फ्राइडे वाला थोड़ा छोटा करते हैं, बिकॉज हिंदू एनालिसिस भी करना होता है, टाइम एक्सीड हो जाएगा वरना. ट्यूसडे को थोड़ा सा और कट डाउन कर लेंगे हम एनालिसिस को, एंड क्विज थोड़ा बड़ा कर देंगे. ठीक है, दैट इज समथिंग विच वी कैन डेफिनेटली डू. वोकैब हमने आज की कर लिया. दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट. इफ यस, क्विकली गिव अ लाइक ऑन दिस video and make sure you are doing your vocabulary wala homework in the comment section. I can see only a few of you doing it, so it's for your benefit. नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, करोगे तो आपका ही फायदा है, थोड़ा सा मेरा भी फायदा है. तो कर दिया करो. एक वर्ड लिखना होता है बस और उसका मीनिंग लिखना होता है इन द कमेंट सेक्शन. मेक श्योर यू डू इट एवरी डे. Tanmay Ram is saying, I'm a new student, just wanted to tell you quiz was great. Thank you so much, really appreciate the feedback. I'm glad you enjoyed it, and I hope to see you again on Tuesday, and we will meet again on Monday, guys, at 4:30 p.m. with another Hindu analysis. I hope you all have a lovely weekend. Keep learning, keep preparing. Signing off.